প্রদীপ প্রজ্বলন পর্ব চলছে। উপস্থিত রয়েছেন শ্রী জ্যোতির্ময় Assistant Director, Ministry of Tourism, Government of India. We have with us Mr. Sajid Saha, Chairman CI, North Bengal Sikkim Zonal Council. We have with us Mr. Sanjay Tibrewal, Vice Chairman, CII, North Bengal and Sikkim Zonal Council. We have with us our respected Mr. S.N. Pradhan, Mr. Das, along with seven. আমরা আমাদের একজন কোভিড যোদ্ধাকে পেয়েছি আমাদের মাঝে। আমরা তাকে সম্মাননা জানাবো। মঞ্চে আহ্বান করছি মিস্টার জিতু গিরি, জয়েন্ট সেক্রেটারি HHDD। কবিগুরু বলছেন, বিপদে বলে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়, সহায় মোর না যদি জোটে, নিজের বল না যেন টুটে। আর তাই তো সন্দীপদা আমাদের মাঝে আজও এভাবে রয়েছেন, এবং সন্দীপদার মতো মানুষেরা রয়েছেন। Present here and a member from the media and my Vice Chairman Sanjay Tibrewal, our senior member Mr. Suresh Priyal. Good evening to you all. Since I'm the chairman of CII DCI for North Bengal Zonal Council, obviously this is my concern. जैसा कि आप सबको पता है, आज विश्व पर्यटन दिवस है और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल का जो हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम है उसको टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट रखा है। We all are aware that there has been a very symbiotic relationship between tourism and rural development. In fact, we have started to look towards, like it was also discussed in the panel discussion, towards experiential tourism. So more and more people are actually willing to go back to the countrysides, go back to the villages, go back from the urban madness which has given that impetus to rural tourism. It is also extremely important because employment, tourism being one of the largest generators of employment, an engine of socio-economic growth, and also ecotourism, which is slowly becoming the most heard buzzword in the tourism industry. So the entire rural tourism fabric can be held together by these basic knots. So, ecotourism, the fabric of rural tourism is woven, and it is in this spirit that the theme for this year's World Tourism Day celebrations has been kept as tourism and rural development. The World Tourism Day celebrations, like every year, this year we are not celebrating World Tourism Day, it's more like observing World Tourism Day. The reason being, the entire industry has been taking a poignant pause in the wake of the COVID-19 pandemic. We are all waiting for the pandemic to subside, for the vaccine to come, for people across the globe are actually itching to travel. Tourism will definitely be back with a vengeance, and we as stakeholders will embrace that change with open arms. India Tourism Kolkata, which is the regional office east, has organized several events across the region for observing the World Tourism Day. I believe all of you have been given a press brief in which each of these events have been detailed. Now, I would be happy to answer any specific questions that you may have in this regard. So please feel free to ask your questions. Thank you.
commercial property in tea garden. What was the idea behind it? Tea gardens are a niche tourism product. So basically, tea gardens have been in existence for the last maybe 150, 200 years, and post-independence, a lot of metamorphosis has happened in the tea industry. Now, these tea gardens are always located in geographical locations which are essentially exotic. Historically, these tea gardens used to have these bungalows where the tea garden managers used to stay. Sometimes for guests, there used to be another bungalow. Now, these properties essentially were, based on British architecture at the time they were built, and a lot of them are still preserved in very good condition. Of the urban life. Now this is what sprouted the idea of commercially letting out these exotic properties. Now over the years, over the last 1.5 decades, we have seen that a lot of these properties have been very well renovated, converted into extremely niche properties. They command excellent rates globally, and we see a lot of inbound tourists actually coming to India to experience these properties. Like we have been talking a lot about experiential tourism. So tea tourism is, and since these bungalows are essentially located again in the middle of these estates, there is also a tea factory where somebody who is interested can actually go through the entire tea making process, making it an absolutely delightful holiday for them. So that is why tea tourism is taking off. Now we have made certain efforts to actually promote tea tourism in markets where there is acceptance for this, and we have been trying to also educate markets where tea tourism has been hitherto lesser known as a product. And we have gained success, which shows in the growth and the spur of tourism in these parts, in North Bengal. Unfortunately, due to the pandemic, there has been a slowdown, but I am quite sanguine that things will change in the months to come. Thank you. What is the target actually in aspect of revenue and each of the people? As government, we do not have revenue targets. Revenue targets are decided by the trade establishments. I am sure they have ambitious targets, and I am also confident that those targets will be met. Any other questions? Actually, your department just organized a program to mark the date. I beg your pardon? Your department Organized a program? right, organized a program to mark the date today. Okay, right. And Amit Shah, actually, he was addressing. In his address, just he requested the Union Tourism Minister just to focus not this. Manoj Babu, thank you for asking that question. It is a wonderful question. Thank you. Right. So, how do we promote Northeast in Gujarat? How do we promote Kashmir in Tamil Nadu? How do we promote Karnataka in Punjab? How do we promote West Bengal in any state of the country? It is exactly in this line that our Honorable Prime Minister has envisioned a beautiful scheme that is called Ek Bharat, Shresth Bharat. The idea behind the scheme is to create pairs of states where there would be exchange of knowledge, exchange of culture, exchange of thoughts, and exchange of people. So people from these states would visit the other state, experience the products and the offerings of that state, and go back to the state, talk to people about it. You see, what happens is, in our country, which has a population of close to 130 crores, not all people are as lucky as you and us. A lot of people actually grow up in the area, in the place where they are born. They never leave that place, they don't see other parts of the country, and they don't understand the diversity of culture, traditions, colors, life that our country, our beautiful country has to offer.
So probably someone who is born in a small village in the northern part of Bengal actually doesn't experience any other part of the country or the world. Now, how does he get to know about other parts of the country? For example, the state of Kerala, or the state of Rajasthan, or the state of Jammu and Kashmir, for example. Now, this is where this idea comes in. So the idea is make pairs of states. For example, we pair Goa with Jharkhand. For example, we pair Odisha with Maharashtra. Maybe we pair Bihar with Tripura and Mizoram. So what happens is, across ministries, we have the mandate to create the Ek Bharat Shresth Bharat fabric between the paired states. Now, West Bengal can be paired with any state in the country because West Bengal has not been identified with any paired state. So we are actually pairing West Bengal with all the states in the country. So what is happening is, we are, insofar as tourism is concerned, we have our educational institutes in hotel management, in tourism, for example, the Institutes of Hotel Management, IHMs, the IITTMs. The students and the faculty from these institutes are actually visiting the paired state institute. So for example, somebody who is who is a student or a faculty in IHM Bhubaneswar is actually visiting IHM Mumbai in Maharashtra, because Odisha and Maharashtra are paired states. A team of journalists from Maharashtra are coming to Odisha. They are taking photographs, they are meeting people, they are experiencing the heritage of that state, they are going back to their states, they are blogging about it, they are writing about it. So people in Maharashtra are getting a first-hand experience of what Odisha has to offer and vice versa. Now suppose this continues for the year 2020, and in 2021, Odisha has a new pairing state. For example, Odisha is paired with, let's say, Tamil Nadu, and Maharashtra is paired with, let's say, West Bengal. Now again the same process starts. So at least the flow of the exchange of ideas, the process starts. And this, I believe, was your question. How do we do this? We have already started to do it. I will go to my colleague Shayad, if this, I'll give him the microphone to actually detail some of the Ek Bharat Shresth Bharat activities that have been conducted by us in our region with the states outside our region that our states have been paired with. Shayad, please. Thank you, sir. See, the form of promotion of Ek Bharat Shresth Bharat, we have taken certain steps in social media handles. First of all the India tourism offices, the regional offices and sub-offices, we are promoting, pair state creatives. Suppose the cuisine of Odisha with the cuisine of Maharashtra, the waterfalls in Goa with the waterfalls in Jharkhand. Those kind of creatives are being promoted through the Incredible India website, Incredible India social media handles. At the same time, the India Tourism Kolkata and other India Tourism social media handles. Next, what we have created certain Incredible Indians, many faces one Indians that is associated with that. So that in a way serve the theme of World Tourism Day, that is tourism and rural development. Apart from that, the India Tourism Kolkata Regional Office East, Ministry of Tourism, had organized 3 consecutive road shows last year, 2019-20, of its first of its kind. We invited 90 buyers to this part of the country from Delhi, Mumbai, Bangalore, where we had showcased East and Northeast, covering North Bengal and other northeastern states and eastern states. So it was a planful B2B event, come fam trip for 90 important tour operators who can send tourists to this region. So that was, and Radio Mirchi. Even on Saturday, yesterday, there was that radio storytelling session was going on, like about the handicrafts, about the destinations, about the lifestyle of different pair states. So these are quite unique initiatives that was designed by India Tourism Kolkata, the regional office East,
and other India tourism offices governed by regional director. Mr. Banerjee, like you said, your question was how do we pair Gujarat with the Northeast. For this year, Gujarat is paired with the state of Chhattisgarh. The pairing is done by the Ministry of HRD, so we can be hopeful that perhaps next year Gujarat will be paired with some of the northeastern states. मिस्टर चौधरी, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म डिपार्टमेंट जी आखिर जो ये लॉकडाउन पीरियड में जी। सारा इस समय जो नुकसान जी। सामना कर रहा है जी। इस सामने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा योजना रखा है जो अपना होटल बिजनेस होल्डर जितने हैं सारे हिंदुस्तान में जी इन लोगों को जितना नुकसान हो चुके हैं जी। लेकिन ये पूर्ति करना बहुत मुश्किल की काम है जी। जीडीपी हम लोग को बहुत डाउन है जी। लेकिन आखिर इसके लिए कोई प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आगे का दिन में एसोसिएशन जैसे आपने HSTDN एक ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे एथोवा एक ट्रेड एसोसिएशन है इस रीजन का, इन सारे एसोसिएशंस का एक फेडरेशन है जिसे कहते हैं फेथ के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास आया फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, राइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने उसको स्टडी किया, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक पेपर था, और स्टडी करने के बाद जैसे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हम करते हैं कि हम उसको जो है अपनी तरह से जस्टिफाई करते हैं, जो भी ट्रेड की डिमांड होती है, जो हमें वाजिब डिमांड लगता है, उसको हम जस्टिफाई करके वी सेंड इट फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है DIPP, तो ये बड़ा एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन प्रोसेस है और ये प्रोसेस अभी जारी है। तो ये अभी मेरे लिए ये बताना संभव नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर से क्या सोचा है, बट जो भी सजेशंस आए हैं उस पर एक विचार का प्रोसेस जो है, जो हर सजेशन के साथ होता है, वो प्रोसेस चल रहा है, इट इज ऑलरेडी अंडर वे। तो हमें थोड़ा सा समय देकर के ये देखना पड़ेगा कि उसका आउटकम क्या है। Actually, that airport is not functioning. Shiki airport is not functioning. Yeah, there are some issues. Yeah. Actually, have you informed your department, or just will you inform about the prospect of the vacuum, which is still non-functioning? Sorry. Manasji, your point is very well taken. Unfortunately, Sikkim does not fall within the eastern region. Yes. So Sikkim comes under northeastern region, so I do not look after. Actually, from Calcutta, I guess you also oversee the part of Bhutan and others. So, Right. No, so what happens is, whenever we give a proposal that we feel that this is a right time to tap into the potential of some of these countries like Bangladesh, Myanmar, Bhutan, etc., the ministry again considers that proposal, and sometimes they give an approval, sometimes they say that perhaps this is not the right time, we should do this at this time, some other time. So it's a ongoing process, and there's no fixed thumb rule for that. মিস্টার চৌধুরী, একটা যেটা বিষয় দীর্ঘদিন ধরে এই রিজিয়নের একটা দাবি ছিল, কলকাতার বিসাইজ দি ক্যালকাটা আমাদের নর্থ বেঙ্গলের যে এয়ারপোর্ট রয়েছে বাগডোগরায়, সেখানে সঙ্গে কানেক্টিভিটি উইথ বাংলাদেশ। আপনার যদিও এটা আপনাদের ডিপার্টমেন্টের সরাসরি বিষয় নয়, স্টিল আপনাদের কোনো প্রপোজাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর কিছু আছে? এবং बांग्लादेश ঢাকা উইথ বাগডোগরা। CIA से भी हम लोगों ने ये प्रपोजल दिया था। तो अभी सेतपुर में एयरपोर्ट बन रहा है बांग्लादेश का, तो हम लोग उसका बात चल रहा है कि बागडोगरा, सेतपुर और ढाका, सेतपुर और बागडोगरा, ये सेतपुर का जब कंप्लीट हो जाएगा तो उन लोगों का 6 महीने 8 महीने में हम चेयरमैन लोग हम लोग गए थे बांग्लादेश, तो वहाँ पर लोगों को बात हुआ था, हम लोग भी CIA की तरफ से दिए थे। तो ওটা আমার মনে হয় কি ওটা প্রসেসে আছে, তো এটা হওয়া উচিত। আমরাও প্রপোজাল দিয়েছিলাম, ওটা প্রসেসে আছে। বাংলা মানে বাগডোগরা, সেতপুর আর ঢাকা, সেতপুর আর বাংলাদেশ। আপনারা কিছু ভাবছেন? আমি আপনাদেরকে এটার ব্যাপারে যেটা বলতে চাই, খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। বাংলাদেশ আমাদের দেশে ইনবাউন্ড নাম্বার অফ টুরিস্ট, তো বাংলাদেশ আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সোর্স মার্কেট, কারণ আমরা বেসিক্যালি ফরেন কারেন্সি এবং ফরেন ইন্টারন্যাশনাল ফুটফলস, যেগুলো আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ইনবাউন্ড ট্যুরিজমের গ্রোথের বেসিক প্যারামিটার বলে আমরা ধরি,
সেটাতে প্রথম স্থান বাংলাদেশের। অগত্যা আমাদের এটা ডিনাই করার কোনো উপায় নেই, কোনো জায়গা নেই যে বাংলাদেশের থেকে যদি আমাদের ফ্লাইট কানেক্টিভিটি আরো ইমপ্রুভ করে তাহলে সেটা ইন্ডিয়ার ট্যুরিজম ইকোনমির জন্য ডেফিনেটলি উইদাউট এনি সেকেন্ড থট ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল। এইখানে আমরা রিসেন্টলি দেখেছিলাম লাস্ট ইয়ার 2019-এ there was a flight connectivity that started between Bangladesh and Guwahati. প্রথম I think SpiceJet started with connecting Guwahati with Bangladesh, এবং আমরা এই ধরনের কোনো প্রপোজাল এখনো পাইনি। আমি HHTDN এর কর্মকর্তাদের রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা এই প্রপোজালটা আমাদেরকে দিন, so that we can take it up with our headquarters in Delhi and in turn with Ministry of Civil Aviation, যাতে তারা এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে যে we can take it forward. It's a very good proposal actually, potential আছে। মিস্টার চৌধুরী, ওদের তরফ থেকে আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমরা ওই বাংলাদেশ বাগডোগরার এয়ার কানেক্টিভিটি ব্যাপারে যেমন কথা বলছিলাম, নেপালের সাথে বাগডোগরা কানেক্টিভিটি ব্যাপারেও কথা বলতে চাইছিলাম। ইউ মাস্ট হ্যাভ নোটিসড যে নর্থ বাংলাদেশের যারা এর তরফ থেকে আমরা একটা প্রপোজাল পাই both connecting Bangladesh to Bangladesh as well as Nepal। তার সাথে ওদের একটা ইস্যু আছে, বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে চায় ইন্ডিয়াতে ট্রিটমেন্টের কথা যদি আপনারা ঠিক আছে, একটা প্রপোজাল দিন। ইন্দো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন চিরাহাটি হলদিবাড়ি করছেন না, আসলে ধরুন কানেক্টিভিটি সম্বন্ধে প্রশ্নগুলো আসলে বা প্রপোজালগুলো যাই হচ্ছে প্রথমে মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েজ অথবা মিনিস্ট্রি অফ সিভিল এভিয়েশন। আমাদের কাছে আমরা বেসিক্যালি মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজমের এই যে রিজিয়নাল অফিস, আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজটা হচ্ছে ট্যুরিজমকে প্রমোট করা, অর্থাৎ পাবলিসিটি করা। এই যে ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া কখনো আপনারা দেখবেন না যে একটা এয়ারপোর্ট উদ্বোধন করতে टूरिज्म मिनिस्टर कैसे। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।